Today we have to learn how to differentiate those equations which are defined parametrically or implicitly. So first, the differentiation of parametric equations. So our objective is the differentiation to find dy by dx when your parametric equations are given. Our actual objective is to find the differentiation of parametric equation, but before this, we want to learn what are actually parametric equations. So थोड़ा सा उसका brief introduction कि ये parametric equations होती क्या है, but actual हमारा objective क्या होगा कि parametric equations given होंगी and we will differentiate them. Okay, see, if we have a question y is equal to square root of x plus 3, ये एक इक्वेशन है, नॉर्मल इक्वेशन आपके पास ऐसी ही होती है कार्टेशियन प्लेन में y is equal to under root x plus 3 mean y in terms of x. ये नॉर्मल आपकी इक्वेशन है. आप अगर चाहें, if I ask you to find dy by dx, तो आप ये फाइंड कर सकते हैं. That is purely P1 question. आप dy by dx इसमें से फाइंड कर सकते हैं. Okay, I want to make the parametric equation of this particular equation. देखिएगा कैसे. Yes, you can. The meeting is logged, but you can rejoin. I'm going to unlock. So y is equal to under root x plus 3. If I say let this under root x is equal to t, I have introduced a new variable here, t. And in these type of questions, that new variable t will be called as the parameter, mean the new variable or new parameter. So t is the parameter here. अगर मैंने under root x is equal to t let किया, तो my equation will become y is equal to, if I substitute under root x with t, so I will get y is equal to t plus 3. I got one equation for y in terms of t. Now I want to make another equation for x in terms of t. So use this. If I want to write x in terms of t, I need to take square on both sides. और अगर मैं square लूं तो x will be equal to t square. So now I got two equations. Both equations, one of them is for y, another is for x, and both are written in terms of t. In terms of t mean in terms of new variable, in terms of new parameter, and new parameter is t here. So these two equations are called the parametric equations. Your original equation was y is equal to under root x plus 3, and the parametric equations of this are y is equal to t plus 3, x is equal to t square. So ये new parametric equations कैसे आती हैं? आप कोई भी एक supposition जो करते हैं उससे आ जाते हैं. जैसा मैंने क्या लेट किया यहाँ पे, under root x is equal to t लेट कर लिया, एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया, मीन न्यू पैरामीटर इंट्रोड्यूस किया. सो अब फिर मैं अगर y और x को इन टर्म्स ऑफ दैट न्यू पैरामीटर लिखूंगा, y is equal to t plus 3 and x is equal to t square. So these two are the parametric equation of the original equation y is equal to under root x plus 3. So parametric equations कुछ नई बात नहीं है, सिर्फ आप एक न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं, सपोजिशन कोई करते हैं, जिससे आपके पास टू न्यू इक्वेशंस आ जाती हैं, और दोनों में y और x इन टर्म्स ऑफ t जब आप लिखते हैं तो दीज आर द टू पैरामीट्रिक इक्वेशंस. अब अगर ओरिजिनल इक्वेशन दी हो, दिस वन, आपको कहा जाए फाइंड dy by dx, तो आप कर सकते हैं, आपने तो ये P1 में भी किया था. बट नाउ द क्वेश्चन विल बी, these two parametric equations will be given in the question, and you have to find dy by dx. So ये है हमारा ऑब्जेक्टिव. हमें ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस कहाँ से आई है, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दिया है, बट हमें दैट इज नॉट रिक्वायर्ड. हमें क्या चाहिए, हमारे पास द क्वेश्चन विल बी दीज टू पैरामीट्रिक इक्वेशन, मीन वन ऑफ देम इज y is equal to t plus 3 and the other is x is equal to t square. Now in our question, make बहुत simple example से start करूं. These two parametric equations are given where parameter is t and the question is to find dy by dx. Now let's see how to find dy by dx here.
मेजॉरिटी आपका पोर्शन क्या होगा, आपका ये ए एस ही होगा। देखिएगा आपके पास जो इक्वेशन y इज इक्वल टी प्लस थ्री एंड x इक्वल टी स्क्वायर, टू पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं, इनको सेपरेटली डिफरेंशिएट करें। नाउ दिस इज रिटन y इन टर्म्स ऑफ t, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वी विल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, so it will be on the left we will get dy by dt. What's the differentiation of t? 1. What's the differentiation of 3? 0. So we got dy by dt as 1. Now differentiate the second equation. This is also written, this is written for x in terms of t. So अगर इसको हम differentiate करेंगे तो we will get dx by dt. And what's the differentiation of t square? It is 2t. So we have differentiated both parametric equation. We got dy by dt and dx by dt. But we are looking for dy by dx. वो कैसे find करेंगे? Again, AS, chain rule. Yes, Mikhail, you are right. So we need to apply chain rule. We are looking for dy by dx. क्या था chain rule? Your chain rule was dy by dx is equal to dy by dx. Both sides are equal. Now see what is the third variable in this question. What's the new parameter? The parameter is t. So you will write here dt, dt. So your chain rule will be dy by dx is equal to dy by dt into dt by dx. Now use the values. The value of dy by dt is 1 into dx by dt is 2t, but we have to put here dt by dx. So if dx by dt is 2t, then dt by dx will be 1 over 2t. So we got the answer dy by dx is equal to 1 over 2t. dy by dx is equal to 1 over 2t. I hope it's clear. So कोई मुश्किल बात नहीं है। आपके पास जो टू पैरामीट्रिक इक्वेशंस गिवन होंगी उन दोनों को सेपरेटली आप डिफरेंशिएट करें। जब दोनों को डिफरेंशिएट कर लिया तो आप चेन रूल अप्लाई करें। चेन रूल अप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब थोड़ी सी इसकी एक्सटेंशन, मीन इसमें फर्दर क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड, लाइक द क्वेश्चन कैन बी कि वी हैव टू फाइंड, मीन say the question is saying find the gradient at t is equal to 2. So gradient, I hope आपको याद होगा p1 में gradient dy by dx आपका gradient ही शो करता है, gradient of tangent. So at t is equal to 2, आपका जो gradient already आ रहा है dy by dx वो already in terms of t है, तो simply you will put this t here, तो आपके पास 1 over 4, तो gradient at t is equal to 2 will be 1 by 4. Okay, if I ask you to find the gradient at y is equal to 7, ये कैसे find करेंगे? Find the gradient at y is equal to 7. जी, the problem here is कि your dy by dx means your gradient is in terms of t, आपके पास वो 1 over 2t है, वो 1 over 2t है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है find the gradient at y is equal to 7. So first we will use this y is equal to 7 in this equation, original equation, जो कि आपके पास y in terms of t है, वहां y 7 पुट करेंगे, so 7 minus 3 आपके पास t आ जाएगा 4, और वो जो t4 आएगा you will put that 4 here, your gradient will be 1 by 8. इसी तरह अगर x दिया है तो x आप पहले ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करेंगे, वहां से t आएगा, t आप पुट कर देंगे। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर इसी में ही हो, फाइंड द ग्रेडियंट एट द पैरामीटर t
Now the value of t, value of x, or value of y is not given. It says find the gradient at the parameter t, 1 over 2t. अब आपको कोई वैल्यू नहीं बता रहा, कोई पर्टिकुलर आपको कांस्टेंट आंसर नहीं चाहिए. यू नीड द आंसर इन टर्म्स ऑफ t. So find the gradient at the parameter t. This is already your gradient in terms of t. So अगर आपसे कहता है find the gradient at the parameter t, so it is 1 over 2t. क्योंकि इसमें कुछ नहीं फर्दर पुट करना. If I say find the gradient at the parameter p, तो आप वही जो पैरामीटर ऑलरेडी t यूज हो रहा है उसको आप t की जगह p पुट कर दें. So it will be 1 over 2p then. ठीक हो गया. लास्ट क्वेश्चन पार्ट इससे रिलेटेड, अगर वो कहता है find the equation of tangent at parameter t. Find the equation of tangent at parameter t. सबसे पहले तो मैं रिकॉल करूंगा कि हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे फाइंड करते थे ओ P1 में. Equation of any straight line is y minus y1 is equal to m into x minus x1. If you want to find the equation of straight line at x is equal to certain point, तो आप dy by dx फाइंड करते थे, उसमें x कोऑर्डिनेट पुट करते थे, ग्रेडियंट आ जाता था. और जिस पॉइंट गिवन है वो x1 और y1 वो आपको गिवन होते थे. अगर नहीं गिवन तो एक कोऑर्डिनेट जरूर गिवन होता था, उसको ओरिजिनल को इक्वेशन में पुट करते, यू गेट द अदर कोऑर्डिनेट एज वेल. बट यहाँ पे यू डोंट हैव द कोऑर्डिनेट्स एनी पॉइंट, कोई t पॉइंट नहीं गिवन, कहते हैं एट पैरामीटर t. सो इसका मतलब आपकी इक्वेशन भी इन टर्म्स ऑफ t होगी एट पैरामीटर t. सबसे पहले तो ग्रेडियंट बताएं क्या होगा एट पैरामीटर t. नो चेंज, इट विल बी 1 over 2t. So the gradient will be 1 over 2t. So gradient में आप पुट कर देंगे 1 over 2t. But the question is कि what is this x1 and y1? वो भी याद रखिएगा because you are trying to find the equation of tangent at parameter t. तो x और y coordinate भी in terms of t होंगे. Yes, Abdullah, you are right. So x and y are these original equations. Your x coordinate is t square and y coordinate is t plus 3. So x coordinate is t square and y coordinate is t plus 3. So ये आप पुट कर दें y minus y1 mean y1 is t plus 3 is equal to gradient 1 over 2t x minus x1 and x1 is t square. This is the equation of tangent at parameter t. मैं simplify नहीं कर रहा, वो हम आगे कर लेंगे. So this is the required equation. Okay, अब हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन जिसको हमने डिफरेंशिएट करना होगा. अभी तक मैंने एक सिंपल इक्वेशन ली, ये तो आपका P1 था, बट हम अगर P3 के क्वेश्चंस लें. से if I have y is equal to e raised to power 5t and x is equal to 3 sine 4t. The question is to find dy by dx. Please start. Find dy by dx in terms of t. Differentiate both parametric equations separately. If you differentiate y is equal to e raised to power 5t, you'll get what dy by dt. If you differentiate the other equation, you'll get dx by dt. Then apply chain rule, you'll get dy by dx. Your dy by dt will be
5 e raised to power 5t, and your dx by dt is 12 cos 4t. I hope these two differentiations are correct. Now apply chain rule, which is dy by dx is equal to dy by dt into dt by dx. Your dy by dt is 5 e raised to power 2 5t, and dt by dx is 1 over 12 cos 4t. So final answer is 5 e raised to power 5t over 12 cos 4t. The question was to find dy by dx in terms of t. So here is the answer. G, is that clear? Any question, any problem? Okay. Then here is another question. Again, I'll give you two parametric equations. You need to find dy by dx. Your x is equal to sine square t, and y is equal to t cube cos t. Find dy by dx. Please start. Hasib Arshad is absent. No, he's here. She's here. Malaika Jamal is absent. Hamna Rehan was in first group today. अगर कुछ कैंसिलेशन होती है तो कर दें, अदरवाइज यहीं तक आंसर. So to differentiate first equation, x is equal to sine square t, first you need to apply the power rule. Mean 2 whole power will become coefficient, sine raised to power 1t, and then the differentiation of sine t is cos t. I hope आपके यही answers. The differentiation of dx of x, mean dx by dt is 2 sine t cos t. And how to differentiate the other equation? They are getting multiplication. So product rule. हम डायरेक्ट t क्यूब कोर cos t को individually हम differentiate नहीं कर सकते. We need to apply product rule. I hope you did that. So dy by dt, the product rule says differentiate first
function t cube की differentiation is 3t square, and write second function cos t as it is, plus the differentiation of cos t is minus sin t, so that plus will become minus sin t then, and t cube as it is, तो मैं t cube को इधर आगे नहीं दिख रहा, I am writing this here before sin t, so it is minus t cube sin t. I hope कि आपकी differentiation correct होगी. Now once you have this, now dy by dx by chain rule, so dy by dx is dy by dt dt by dx. So what is dy by dt? Dy by dt is 3t square cos t minus t cube sin t, and dt by dx is 1 over 2 sin t cos t. So I can write here 2 sin t cos t. सीधा क्या? Sometimes उसने लिखा होता है मीन यूज चेन रूल, मीन अब हो सकता है इसी क्वेश्चन के 4 मार्क्स हो, 1 मार्क इसका हो, 1 मार्क इसका, और साथ और फाइनल आंसर का तो डेफिनेटली 1 मार्क, और यहाँ पे अक्सर लिख देते हैं यूज चेन रूल, यूज चेन रूल करने का 1 मार्क आ जाए, और वो M1 नॉर्मली होता है फिर, तो अगर वो M1 नहीं मिला तो नेक्स्ट फाइनल आंसर A1 भी में नहीं मिलेगा, सो इसलिए बेहतर है आप वो चेन रूल लिखें. Okay, one more question of parametric equation. If we have y is equal to e raised to power 2t over not 2t, 2p. I'm changing the parameter. Now I'm using the parameter p. E raised to power 2p over tan p, and x is equal to ln p whole cube. Find dy by dx. किसकी? कैंसिल कर. So need to apply quotient rule to differentiate this. Dy by dp. Denominator will have 10p whole square, or we can write 10 square p. And the numerator, the differentiation of first function is 2e raised to power 2p, 10p as it is, minus differentiation of 10p is secant square p, and e raised to power 2p as it is.
Here, if you differentiate x, so dx by dp, first we need to apply whole power rule. Whole power will become coefficient ln p whole square. Then the derivative of inner base, the derivative of ln p is 1 over p. So the chain rule, dy by dx is dy by dp into dp by dx. What is dy by dp? It's 2e raised to power 2p tan p minus e raised to power 2p secant square p over tan square p into dp by dx. dx by dp may you have p in the denominator. So if I take dp by dx, it will become p over 3 ln p whole square. We are not simplifying anything. We are learning the techniques of finding dy by dx. So I hope you got the answer. Same answer. G, any problem in these parametric equations? Sir, can you please go back to the previous pages once the questions are done? So previous pages mean our previous page. You can जो unmute yourself. introduction के pages से. Introduction के pages. I think आज हमने यहाँ से start किया है. Thank you, sir. That was the first page. That was second. Okay, parametric equations के बाद next and last thing which we need to learn is how to differentiate implicit equations, the equations which are defined implicitly. That will be the last concept of differentiation. Implicit equations. जिस तरह पैरामीट्रिक इक्वेशन में हमें हमारा ऑब्जेक्टिव था कैम्ब्रिज सिलेबस के मुताबिक टू डिफरेंशिएट द पैरामीट्रिक इक्वेशन, यहाँ पे भी क्या है कि इम्प्लिसिट टू डिफरेंशिएट द इम्प्लिसिट इक्वेशंस. लेकिन उधर भी हमने देखा कि पहले हमने थोड़ा सा आइडिया लिया कि होती क्या है पैरामीट्रिक इक्वेशन. तो अब यहाँ पे चेक करते हैं कि इम्प्लिसिट इक्वेशंस क्या होती है. मिकाइल इसको ऑन करें जल्दी. Okay, if we have an equation like y is equal to x square minus 3x plus 2, that's a simple algebraic equation in which y is written in terms of x. इसको अगर कहा जाए डिफरेंशिएट करें तो कोई मुश्किल बात नहीं है आपके लिए, आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं. या आप p1 में कर चुके हैं. You can find dy by dx here. That's one example. मैं कुछ एग्जांपल लिखूंगा फिर मैं बताऊंगा इम्प्लिसिट इक्वेशन इनमें से कौन सी. Second, if I write here say e raised to power x y minus y is equal to sine x. Now what's the difference between first equation and second equation? अगर दोनों में कहा जाए dy by dx, so you can find dy by dx quite easily from the first. नहीं ऑन हुआ. उधर से स्विच एक दफा ऑफ करके ऑन करें.
ठीक हो गया। अच्छा जी बताइए, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों में अगर कहा जाए dy बाई डी एक्स, क्या आप दोनों में dy बाई डी एक्स फाइंड कर सकते हैं? फर्स्ट में तो आप फाइंड कर सकते हैं, वो तो आप P1 में करते रहे। सेकंड में फाइंड कर सकते हैं? यस और नो, और अगर नहीं है या यस है, जो भी है, क्या कॉम्प्लिकेशन है इस क्वेश्चन में? सॉरी, साइन कॉम्प्लिकेशन नहीं है। कॉम्प्लिकेशन इसमें ये है कि फर्स्ट इक्वेशन में ऑलरेडी y सब्जेक्ट बना हुआ है, उसको लेफ्ट साइड y को डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई डी, सो राइट साइड पे थ्रू आउट आपकी इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x है, तो उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि यहाँ y सब्जेक्ट नहीं बना हुआ। क्या y सब्जेक्ट बना सकते हैं आप? हाँ, अगर आप y कॉमन लें, e raised to power x minus 1 is equal to sin x. Now you can write y is equal to sin x over e raised to power x minus 1. क्या आप इसको dy by dx फाइंड कर सकते हैं यहाँ से? Yes, we can do by quotient rule. So इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ कि y सब्जेक्ट बनाने के लिए हमें थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ी, और उसके बाद डिफरेंशिएशन अगेन हो सकती है। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, y e raised to power x plus sin y is equal to x square e raised to power y. अब y देखें कहाँ आ रहा है, नोट करने से बेहतर समझें पहले क्वेश्चन को। ये नहीं हमें चाहिए, हमें सिर्फ इसमें ये जो आपकी ये रिक्वायरमेंट नहीं है, पेपर में कुछ नहीं आने वाला। सिर्फ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इम्प्लिसिट इक्वेशंस आपको कैसे आइडेंटिफाई करनी है। यहाँ भी y आ रहा है, यहाँ साइन y में आ रहा है, और यहाँ y पावर में आ रहा है। यहाँ से y सब्जेक्ट बन सकता है, यहाँ से तो आप y सब्जेक्ट ही नहीं बना सकते। जब y सब्जेक्ट नहीं बना सकते तो dy बाई डी एक्स भी फाइंड नहीं कर सकते आप। सो ये वो इक्वेशंस हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, इम्प्लिसिट इक्वेशंस। हमने देखना ये है कि इनको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। हाउ विल यू फाइंड dy बाई dx फ्रॉम दीज टाइप ऑफ इक्वेशन वेयर इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू मेक y सब्जेक्ट। तो इसके लिए हमें ये सीखना है कि y वाली टर्म्स को डिफरेंशिएट कैसे करना है। x वाली टर्म्स को तो डिफरेंशिएट करना आपको आता है, x y को डिफरेंशिएट हम कैसे करेंगे। अब नेक्स्ट पेज पे मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड डिस्कस करूंगा। मैं बेसिकली अभी आपको सिर्फ और सिर्फ जो इस पेज के ऊपर मैं आपको वो सिखाऊंगा कि y को डिफरेंशिएट कैसे करना है। फिर मैं एक बॉटम लाइन आपको बता दूंगा, एक एंडिंग पॉइंट, जिसकी वजह से आप पूरा सब क्वेश्चंस कर लेंगे। देखिए, अगर हम x को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, नॉर्मली हम विद रिस्पेक्ट टू x से डिफरेंशिएट करते हैं, तो x की डिफरेंशिएशन क्या आती है? 1। और y को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करें तो क्या आता है? dy बाई dx। ऐसे ही आता है ना। मीन जब लिखा होता है y इज इक्वल टू समथिंग, जब आप डिफरेंशिएट करते हैं तो y को डिफरेंशिएट करते तो dy बाई dx आता है, लेकिन x को डिफरेंशिएट करते तो 1 आता है। ऐसा क्यों है कि x को डिफरेंशिएट करते हैं तो 1 आता है, और y को डिफरेंशिएट करते हैं तो dy बाई dx आता है? किसी के माइंड में कोई इसकी लॉजिक है? इसकी लॉजिक सिंपल यही है, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं। मैं क्या मतलब है इसका? अगर मैं यहाँ लिखा हो y is equal to x, if I want to differentiate this equation y is equal to x, so I will differentiate both sides with respect to x. So mean I will apply d by dx on this side and also d by dx on the other side. और जिधर y लिखा है उधर अगर आप d by dx of y अप्लाई किया तो it will give you dy by dx, और दूसरी तरफ क्या आएगा? dx by dx, and dx by dx is 1. सो यहां से हमें ये पता कि y को डिफरेंशिएट किया तो वी आर गेटिंग dy by dx, और x को डिफरेंशिएट किया करें तो हमारे पास 1 आएगा। ये इसकी लॉजिक है। अब जरा आगे एक और चीज देखिएगा। आपको पता है कि x क्यूब को की डिफरेंशिएशन क्या होती है? 3x स्क्वायर, सबको पता है। लेकिन मैं आप कंप्लीट थोड़ा सा एक स्टेप करूंगा, आपको बताऊंगा कि 3x स्क्वायर आता कैसे है। मीन आपको तो ये रूल पता है, पावर रूल आपको पता है, 3 कोएफिशिएंट बन जाएगा और x की पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे ये। लेकिन इसके आगे भी कुछ होता है जो कि हम लिखते नहीं है।
आगे क्या होता है? आगे इस बेस का डेरिवेटिव होता है। एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? बेस इज एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? dx बाई dx। एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1, जो कि हम लिखते नहीं है, और आंसर फिर क्या आ जाता है? 3x²। बट ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली द डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब इज 3x² डायरेक्ट लिखते हैं, लेकिन क्योंकि x क्यूब में होल पावर पहले रूल लगाते हैं, और फिर बेस x का डेरिवेटिव 1 आता है, जो कि हम लिखते नहीं है। ये तो x क्यूब की डिफरेंशिएशन होगी 3x। विद द हेल्प ऑफ द सेम रूल आई एम गोइंग टू डिफरेंशिएट y क्यूब नाउ। y क्यूब की डिफरेंशिएशन कैसे होगी? इट विल बी 3y², ठीक है। और फिर y की डिफरेंशिएशन, व्हाट्स द डिफरेंशिएशन ऑफ बेस? व्हाट्स द डिफरेंशिएशन ऑफ y? dy by dx, that's the important thing. So x क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे तो we will write 3x²। y क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे तो we will write 3y² dy by dx. So what's the difference? हमें याद क्या रखना है कि जब y को डिफरेंशिएट करें साथ dy by dx भी आ रहा है। एक और एग्जांपल से मैं चीज क्लियर करता हूं। See, if I have sin x and then I have sin y, what's the differentiation of sin x? cos x, और फिर x का डेरिवेटिव 1, एंगल का डेरिवेटिव 1, सो cos x into 1 is cos x। जब मैं sin y को डिफरेंशिएट करूंगा, व्हाट्स द डिफरेंशिएशन ऑफ sin y? cos y। एंड व्हाट्स द डिफरेंशिएशन ऑफ एंगल y? y की डिफरेंशिएशन इज dy by dx। सो द बॉटम लाइन इज कि differentiation of all the expressions which are involving y is similar to x, but additionally we need to write dy by dx for every term। मैं आप कुछ एग्जांपल यहाँ पे लिखता जाता हूँ। See here, the differentiation of x4 will be 4x cube। Tell me what will be the differentiation of y4? 4y cube dy by dx। Next example, the differentiation of sin y, not y, sin x is cos x, but the differentiation of sin y will be cos y dy by dx। Differentiation of e raised to power x is e raised to power x। What's the differentiation of e raised to power y? It's e raised to power y dy by dx। The differentiation of cos 2x is minus 2 sin 2x। What's the differentiation of cos 2y? It's minus 2 sin 2y dy by dx। So the difference is almost the differentiation of all the terms of x and y are similar, लेकिन y को जब हम differentiate करेंगे तो आपने यही important बात याद रखनी है कि साथ dy by dx आएगा। यही एक नई चीज आपने पढ़ी है, और अगर आपको ये बात समझ आ गई, अगर ये नहीं भूलते, मीन अक्सर आप डिफरेंशिएट y को करते हो लास्ट साथ dy by dx लिखना भूल जाते हैं। अगर ये नहीं भूलते तो implicit equations की differentiation is not difficult। Let's see, एक क्वेश्चन लेते हैं। Question is x² plus y² is equal to 3x minus 2y, and we have to find dy by dx। y सब्जेक्ट बनाना यहाँ मुश्किल है, लेकिन अगर इजी भी हो तो छोड़ दें, हम डायरेक्ट करते हैं। जी, हम क्या करेंगे? we will differentiate both sides, we will apply d by dx on both sides, mean differentiate left and right side both। left side पे first differentiate x²। what's the differentiation of x²? it is 2x। what's the differentiation of y²? it's y now, 2y dy by dx is equal to differentiate both sides, so what's the differentiation of 3x now? it's 3। and what's the differentiation of minus 2y? minus 2 dy by dx। so I hope this step is clear। अब क्या करें
keep all the terms involving dy by dx on one of the side, either left or right, left पे shift कर देते हैं, and all the terms which are independent of dy by dx on the other side. So I'm keeping 2y dy by dx on the left and shifting to, it will become plus 2 dy by dx is equal to constants, mean other than dy by dx, independent of dy by dx on the right side, 3 minus 2x. क्यों किया मैंने ऐसा? कॉमन लें ताकि हम dy by dx को आइसोलेट कर सकें. So take common now. The common is dy by dx. So dy by dx is 2y plus 2 is equal to 3 minus 2x. So your final answer, dy by dx is equal to 3 minus 2x over 2y plus 2. Right? So this is how you will differentiate implicit equations. G, any problem? Is that clear? Okay, good. Okay, one question for you. Sine y plus x square, not x square, x cube is equal to x square e raised to power y. Find dy by dx. Sine y plus x cube is equal to x square e raised to power y. Light on. Okay, start. Sine y plus x cube is equal to x square e raised to power y. So differentiate left side. So याद यही रखना है, y जब आएगा तो differentiate करेंगे तो dy by dx लिखना है. So sin y को differentiate करेंगे तो it will be cos y dy by dx. The differentiation of x cube is 3x square. Differentiate right side as well. Remember, on the right side, two functions are getting multiplication. So Isra, we need to apply product rule. I hope you did that. So right side पे product rule लगेगा. So differentiation of first function x square is 2x e raised to power y as it is, plus differentiation of e raised to power y is e raised to power y dy by dx, or first function x square as it is. Keep the terms of involving dy by dx on the left, minus e raised to power y x square dy by dx, and the terms independent of dy by dx on the right. Then take common. And finally write the answer. So dy by dx is equal to 2x e raised to power y minus 3x square over cos y minus e raised to power y x square. Okay, last question.
x square y cube plus sine square x. No, it is e raised to power y sine square x is equal to 3. Find dy by dx. It is x square y cube plus e raised to power y sine square x is equal to 3. You need to find dy by dx. So for x square y cube, you need to apply product rule. अच्छा, dy by dx को आपको मैंने बताया हुआ है पहले p1 है कि dy by dx को आप y1 भी लिख सकते हैं, y प्राइम भी लिख सकते हैं. अगर आप चाहते हैं कंप्लीट dy by dx ना लिखा जाए, सिंपली y प्राइम भी आप अगर लिखना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं, सिर्फ शॉर्ट हो जाएगा थोड़ा सा क्वेश्चन. सो x square y cube, first function differentiation 2x y cube as it is. For second, the differentiation of y cube is 3y square y prime. dy by dx mean y prime. And first function x square as it is. मैं dy by dx, I'm just writing y prime. You can write जो मर्जी आप चाहें. So this is the differentiation of first function, product rule. Now the differentiation of e raised to power y sine square x. What is that? The differentiation of e raised to power y is e raised to power y, but we need to write dy by dx, mean y prime. Sine square x, second function as it is. Plus differentiation of sine square x. What's the differentiation of sine square x? Whole power rule लगेगा, 2 coefficient बनेगा, sine power 1, फिर sine का derivative cos. So differentiation of sine square x is 2 sine x cos x. यहाँ पे y prime dy by dx नहीं लिखना क्योंकि हम x को differentiate कर रहे हैं. And first function e raised to power y as it is equal to what? 0. हम differentiate जब करते हैं, we are differentiating both sides. On the right side we have 3, it's constant, तो उसका derivative 0 होगा. Oh sorry, cos x होगा, you are right, cos x, this is cos x. Now dy by dx, जो y prime वाली 2 terms हैं उनको separate कर लें, mean this one and this one, और बाकी दोनों को, so इन दोनों से take y prime common. So if you take y prime common, नहीं वो दूसरी terms जाएंगी, तो subtract होंगी ना. So if you take y prime common, you will get 3x square y square plus e raised to power y sine square x, and shift the terms which are independent of dy by dx on the other side, mean minus 2xy cube minus 2 sine x cos x e raised to power y. 3 को इंजेक्शन लग गया, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है. So y prime is equal to minus 2xy cube minus 2 sine x cos x e raised to power y over 3x square y square plus e raised to power y sine square x. So this is the required dy by dx. G, is that clear? Differentiation of parametric equation and implicit equations. Any question? So with that, we have completed all the concepts of differentiation. मैंने एक worksheet upload की है, उसके 25 questions हैं. आपको इस weekend पे उसके सिर्फ 5 questions attempt करने हैं. Last 5 questions.
गूगल क्लासरूम पे मैंने अटेम्प्ट किया, सो क्वेश्चन 21 to 25 you need to attempt over the weekend. Thank you so much. Allah Hafiz. कौन सी रिवीजन?